because I was not aware of all the other aspects of health, Hmm. and I was only focusing on eating less and on exercising more, my body gradually broke down. Like that pain would never go. I would always have like a little portion of my brain used to be in my That back because I was always aware of it कि हाँ कुछ है, that कुछ भी बैठते उठते सोते पलटते किचन में काम करते इवन सीटेड कंफर्टेबली सीटेड टीवी देखते हुए काउच पे बैठी हूँ फिर भी आई हैड अवेयरनेस ऑफ दैट पेन इट वाज कांस्टेंट अ लॉट ऑफ पीपल वुड सजेस्ट कि ये वाली स्ट्रेचिंग कर लो या ये वाला पर्टिकुलर योगासन है इसे कर लो इससे मेरा ठीक हो गया था Hmm. एंड आई वुड लिटरली डू एनीथिंग आई वुड ट्राई एनीथिंग दैट एनीबडी सेड कि हेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशन विल पावर से या सिर्फ कोई जो हम नॉर्मली ऐसे जानते हैं कि अच्छा कम खाओ कैलोरीज कट करो या फैट्स मत खाओ ये सब करके नहीं होता। जब एक फिजिकली फिट इंसान, एक हेल्दी इंसान एक मोटे इंसान को देखता है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि या तो इस इंसान के पास मोटिवेशन नहीं है, और विल पावर तो बिल्कुल नहीं है, ना एक्सरसाइज करने का विल पावर है और ना ही अपनी जबान पे, चटोरी जबान पे कंट्रोल पाने का। बट रेयरली ये ट्रू होता है। टू डिस्कस मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस that a person goes through, physical transformations, वी आर जॉइंड बाय प्रगति रे, जिन्होंने जो खुद भी अपनी जिंदगी में जिन्होंने काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं और खुद भी वो एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट रही हैं अपने साथ। तो हाय प्रगति, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। हाय सौम्या, प्लेजर टू बी हियर। तो ये एक ये बड़ा सवाल का जवाब दे दीजिए पहले कि क्या एक मोटा इंसान इसलिए मोटा है कि उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ विल पावर है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू पुट इट दिस वे। हम्म। ऑल माय लाइफ आल्सो आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद वेट। कभी बहुत ज्यादा ओबीज तो नहीं थी बट मन में ऐसे हमेशा ही था, शायद लोग चिढ़ाते थे स्कूल में कॉलेज में वगैरह कि मैं थोड़ी चबी हूँ और वेट के साथ मेरा हमेशा ही स्ट्रगल रहा है। हम्म। और क्योंकि मैं इतने हेल्थ प्रैक्टिसेस करती थी, जब मैं कोई बहुत ओबीस इंसान को देखती थी तब लगता था कि ये तो कुछ नहीं करते होंगे, मैं तो ये करती हूँ, मैं डाइटिंग करती हूँ, रनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सब करती हूँ, वो कुछ नहीं करते होंगे इसलिए वो ओबीस है। हम्म। अब लेकिन वो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस हैज गॉन थ्रू अ चेंज because I realize now after having worked with so many people, after seeing so many transformations, कि हेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशन विल पावर से या सिर्फ कोई जो हम नॉर्मली ऐसे जानते हैं कि अच्छा कम खाओ कैलोरीज कट करो या फैट्स मत खाओ ये सब करके नहीं होता। there's a lot more that goes behind a transformation rather than just exercising and eating as we have been thinking of it, and I myself have been thinking of it for all these years. ओके। तो जैसे आपने बोला कि आपको लगता था कि आप चबी हैं, ठीक है। तो जनरली सिर्फ मोटापा इज नेवर, अगर वो मोटापा आपको एवरीडे लाइफ में फ्रिक्शन नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं दे रहा है चलने में, उठने में, बैठने में, तो मोटापा ऑल्सो समटाइम गोज अननोटिस्ड। इट्स एक्चुअली वो जो रोज की ऐसी दिक्कतें होती हैं, उठने की, बैठने की, है ना, चलने में, जो आपको ट्रिगर देती हैं वजन कम करने की तरफ जाने के लिए, है ना। तो आपके लिए ऐसा क्या ट्रिगर था जो जिसने स्टार्ट किया बियॉन्ड जस्ट फिजिकल वेट? So मेरे केस में it was my back pain. I also, like you said, I used to do a lot of workouts. I used to run half marathons. होप कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ इतना सारा करूंगी तो एकदम ऐसे फिगर हो जाएगी स्लिम वाली। एंड उसमें उसमें एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट भी लगता था कि यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर गेटिंग सम मेडल्स और यू आर feeling very powerful in the gym. But yes, it took a toll on my back. And gradually, the pain in the back started, like you said, coming in the way of my day to day life, where I felt कि अब
काम नहीं हो पा रहा है, अब एनर्जी कम हो गई है, कहीं बाहर जाती हूँ तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, दिन में ना एक एक से ज्यादा चीज, बाहर का कोई एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि मैं 2-3 दिन में एक ही एक्टिविटी कर पाती थी, इतनी मेरी कम एनर्जी लेवल्स हो गई थी। ये आप कौन से तो साल की बात कर रही हैं लगभग, जैसे हम अभी 2025 में हैं, ये आप कब की बात कर रही हैं? ये 2018-19 इस दौरान। ठीक है। सो दैट वाज द लोएस्ट पीरियड। शुरू ओके। शायद 10 साल पहले हुआ था, सो लाइक ओके। 2000। उस समय मैं आई वाज अबाउट 38 years old at that ओके। time. So 10 to 12 years ago is when it started for me. ओके। And I wasn't that overweight हम्म। because ऑलरेडी कम खा के और बहुत सारा एक्सरसाइज करके मेरी तो वजन कम हुई थी, बट because I was not aware of all the other aspects of health हम्म। and I was only focusing on eating less and on exercising more, my body gradually broke down. I can, in retrospect, I can see it now, and I'm getting goosebumps thinking of that. That yes, I actually broke down my body by kind of abusing it with not giving it enough food, enough nutritious food, and by like over exercising and really pushing the limits. तो प्रगति, ये तो दिस इज द मोस्ट नोन फॉर्मूला ना, कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो, कैलोरीज कम लो और आउट ज्यादा करो। तो यही तो सबसे पॉपुलर मेथड है, फॉर्मूला है वेट लॉस करने का। फिर अगर ये एब्सोल्युटली। नहीं और करना है तो कैसे होगा वजन लॉस? उस वक्त मुझे भी यही लगता था हम्म। कि यही फॉर्मूला है। एंड एक्चुअली मैं एक्सेल शीट में करती थी कि इतने आज इतने कैलोरीज बर्न करूंगी, आज इतने खाऊंगी तो ये दिस ए माइनस बी इतना होगा, 1 किलो घटाने के लिए 7,000 कैलोरीज लगेंगे, 7,000 कैलोरीज में इतने दिन में घटाऊंगी तो आई हैड अ प्रिडिक्शन ऑल ऑफ दैट। नथिंग ऑफ दैट वर्क। एब्सोल्युटली। And now I know that the body does not work like that. It does not work as per an Excel sheet. So what is it that we need? व्हाट There वर्क are फॉर यू? four pillars of health. हम्म। What worked for me is a long and slow, gradual story. हम्म। But in a nutshell, four pillars of health: good nutrition, हम्म। rest, which includes sleep, good amount of sleep, exercise, mobility, जो भी पूरा वो that realm of strength training, aerobics, everything in that, and emotional well-being, which is being happy, being you know, being a pleasant person, having good relationships, being happy at work, at home, with your spouse, with your parents, emotional well-being. So these four aspects, when all of those get balanced, हम्म। is when your body is at ease enough to let go of the excess वेट। calories or हम्म। the excess fat that it is carrying, हम्म। to let go of mm, okay. The body is at ease to let go of the excess fat that it is carrying. The body is rested enough to then improve the strength, to build muscle, to put down more bone material, to raise your energy levels. राइट। ओके। So that's with nutrition and with sleep. And in that rested and well nourished state, then when you exercise, हम्म। is when you actually see the gains. तो हाउ डिड यू कम टू नो ऑफ ऑल ऑफ दिस? आई मीन, आई एम श्योर, क्योंकि देखिए, Instagram ho, YouTube ho, the entire social media is full of these girlies and the boys is who've done their weight loss, and there are like these meal plans that you text them and they'll DM it to you. So I mean, there are so many people out there who are claiming to know the formula, right, of losing weight. Okay, how did you come up with these four pillars, or how did you understand that a overall approach is going to work with you? How was that journey? How did that happen? So I'll just very briefly go through the journey Yeah, yeah, of sure. my decline and then the point of realization. Hmm. So about the time when I was 38 years of age is when I came upon
long distance running as अच्छा, this new exciting thing. लगभग 40 साल की उम्र में। हाँ 40, 38 आई लगभग, वाज हाँ। एट दैट हम्म। टाइम, हम्म। हाँ 40 के आसपास। हम्म। तो बच्चा छोटा था घर में, आई आई वाज नॉट वर्किंग एट दैट पॉइंट, माय चाइल्ड वाज स्मॉल, and I wanted something exciting, and I said, this is it. This is what is giving me the community, the excitement. There's a goal, and I felt really motivated. And 2 3 years I did a lot of running. It was exciting, but over time that I realized that now that I used to be constantly exhausted. I used to be constantly irritable. बट आई सेड नहीं, मोटिवेशन से हम इसको भी पार करेंगे, और हम सुबह अंधेरे में जागेंगे, रन पे जाएंगे, और बाकी सारा तो करना ही है. सो द ओनली प्लेस आई हैड टू रिड्यूस माई टू इंक्रीज माई टाइम वॉज टू कट डाउन ऑन माई स्लीप. स्लीप के बारे में तो किसी ने बताया नहीं था, सो इट वॉज ओनली अबाउट कैलोरीज एंड एक्सरसाइज. सो करते करते आई थिंक इन अ कपल ऑफ years डाउन द लाइन इज when I realized that I had this one pain in this side of my back, the right side, which started one day, and that pain never went. Usually I would have a lot of pains when I running. कभी knee pain हो गया, कभी toe हो गया, कभी हम्म। toenails हम्म। निकल गए, कभी गिर पड़े. Something or the other is always happening. But they would come and they would go. This ओके। pain in my back, it just wouldn't go, it persisted. And I showed the local doctors, nothing happened. I started showing more and more doctors, specialists दिखाए, spine specialists दिखाए, MRI किया. There was nothing that was showing up in any of the scans. हम्म। I tried alternative treatments, homeopathy, Ayurveda, and not to say that those are not good treatments. It's just that nobody could find out what was wrong with me. Nobody could diagnose me with anything specific so that they could treat me. और ये कैसा दर्द था? लाइक वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ये कैसा दर्द था बैक पेन आपका? It would range between, say, 4 to 8 or 9. ओके। और ये So हर रोज आप महसूस करती थी सुबह से लेके शाम ये तक? constant था. Constant was like a 2 out of 10 would be absolutely constant. Like that pain would never go. I would always have like a little portion of my brain used to be in my बैक back पे because I was always aware of it कि हाँ कुछ है. दर्द। कुछ भी, बैठते उठते सोते पलटते, किचन में काम करते, इवन सीटेड, कंफर्टेबली सीटेड, टीवी देखते हुए काउच पे बैठे हूँ, फिर भी आई हैड अवेयरनेस ऑफ दैट पेन. इट वाज कांस्टेंट. ओके। And then there would be times if I overexerted myself, कुछ ज्यादा, कोई gardening कर लिया या कुछ सफाई कर ली, and my muscles in the back would go into a spasm, is how I understood it. And then there would be like couple of weeks of more intense pain till that settled down again to that 2 or 3 level. So हम्म। this would go in cycles. ओके। तो ओके। एक स्पैज्म होता था, एक ऐसे राइज होता था, फिर धीरे 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 कम होता था. जैसे ही कम होता था आई वुड फील कि हाँ अब तो ठीक हो गया, अब मैं कुछ कर सकती हूँ. एंड अगेन आई वुड गो एंड डू समथिंग, एंड सो देयर वुड बी लाइक टू बेहतर। वीक्स ऑफ पेन and 2 3 days of no सो pain, यू and बिन again I would do स्ट्रगलिंग, something. आप इससे So स्ट्रगल कर रहे हो yes, लगातार? ऐसा नहीं है कि कभी आप absolutely, पूरी पेन फ्री थे? never, ओके। absolutely not a single day, not a single moment did that happen that I could say I didn't have sensation of pain. ओके। एंड दिस वेंट ऑन फॉर हाउ मेनी इयर्स? This was about 7 to 8 years. वाओ। And it after showing all these doctors and going to all kinds of therapies, where mostly the doctors would, just look at me blank. They literally had no expression on their faces that, okay, we know what is wrong with you and we can do this. Because I had total mobility. I was very flexible. I could twist. I could lift things. I could do everything, but still there was pain. जी। So
I just felt that I was going from person to person, trying to search for a diagnosis, trying to find what it is that is wrong with me. Is it a muscle that is weak? Is it a bone that is, defective? Is it a, like a joint में कोई issue है या कोई deficiency है जिस वजह से मेरी healing नहीं हो पा रही है? हम्म। जैसे There was बोलते हैं कि just बैक पेन है, आपको शायद विटामिन डी कम है, विटामिन डी की गोलियां खा लो, है ना, हड्डी में ठीक हो जाए, कैल्शियम खा लो, कैल्शियम से ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं होता है? ये सारा करके देखा, and just as you said, D3, B12 is the first thing that anybody utters. इतना सारा किया, like calcium, D3, B12 is, and once you find something that has clicked, and suppose it's a deficiency and you have plugged that in, then you will start seeing rapid रिजल्ट्स। progress. So there's nothing that actually I could say कि अच्छा ये किया अब ये ठीक होने लगा. ऐसा नहीं था। हल्दी खाओ, haldi, curcumin for recovery, or I can't even remember, stretching of all kinds. लाइक ग्लूट स्ट्रेच करो, ये स्ट्रेच करो, इस ये वाला योगा पोज करो, भुजंगासन करो, सब करके देखो, एंड मोस्टली आई वुड फाइंड दैट वट एवर आई डिड वुड एंड अप इंजरिंग मी मोर. सो मैनी फिजियोथेरेपी, good physiotherapists I have been to, like the best in India. I would be all right for a couple of sessions, but then the same exercises, थोड़ा सा वो intensity बढ़ा देते थे. Again, I would go into हम्म। a spasm. हम्म। So a lot of people would suggest कि ये वाली stretching कर लो, या ये वाला particular योगासन है, इसे कर लो, इससे मेरा ठीक हो गया था. हम्म। And I would literally do anything. I would try anything that anybody said. हम्म। किसी ने बोला हैंग करो, साइडवेज हैंग करो, वो भी करके देखा. हम्म। कितने ना जाने मैंने फिजियोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट्स, जिम के ट्रेनर्स, लाइक आई हैड नो कॉन्वर्सेशन अदर देन बैक पेन विद एनीबडी. किसी के साथ भी, कोई नए पुराने जो भी मिलते थे उनके साथ घुमा फिरा के इट वुड कम डाउन टू दैट, बिकॉज तो ये कहानी शुरू हुई थी वजन कम करने से, या फिर कुछ एक एक्साइटिंग स्पॉट ढूंढने के लिए, और उस प्रोसेस में आपने खुद को इतना इंजॉय किया कि आप एक ऐसे बैक पेन के साथ स्टक हो गई जिससे आप उस लूप से नहीं निकल पा रही थी, राइट? जी. if यस. if that I've understood. Okay. यस. All right. So, before we go ahead in your story, I just want to take you a little bit back the conversation that we were having कि calorie in versus calorie out इतना simple नहीं होता है, right? तो जो लोग, जैसे जैसे मुझे ये बात पता है कि क्योंकि मैं chronic obesity से सफ़र किया है मैंने, तो मुझे ये बात पता है I am like the poster girl of before after before. ठीक है? तो जनरली क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये जो बिफोर और आफ्टर हो गया, दिस इज डन, दिस इज इट, राइट? फिर लेकिन बिफोर की भी एक कहानी होती है ना? तो जो इसके बीच का फॉर्मूला होता है बिफोर आफ्टर का, कि आपने कैलोरी इन कम कर ली, कैलोरी आउट ज़्यादा कर ली, तो आप ये आफ्टर में पहुंच गए, है ना? तो आई वॉन्ट यू टू टेल अस कि क्या ये हाउ लॉन्ग लास्टिंग इज दिस बिफोर एंड आफ्टर, कि एकदम ऐसे जान लगा करके 1100 कैलोरी खा करके और 1500 निकाल करके जिम में वर्कआउट करके, जैसे अभी एविडेंटली आपकी कहानी से भी हमें पता चल ही रहा है, ठीक है? बट आई वॉन्ट यू टू टेल आवर लिसनर्स कि ये कब तक कर सकता है इंसान, अपनी विल पावर पे ऐसे घोड़े पकड़ के उसे कब तक दौड़ा सकता है? हाउ फीजिबल और रीजनेबल इज दिस? जितनी देर घटाने में लगता है उससे शायद 1/4 टाइम फिर से गेन करने में लगता है, लिटरली. एंड मैं 48 किलो तक उतर गई थी. उस वक्त ऐसे लगता है कि एक जरा सा भी कुछ खा लो ना, एक स्लाइस ब्रेड खा लो तो आधा किलो बढ़ जाता है. I used to literally feel that, and experience it, that one bad meal would suddenly put like half kilo on the scale, and then that would not go. It's not like कि temporary है, कुछ water gain है. I don't know physiologically क्या होता था, but I have seen this happening. That's just a little bit of bad eating. Like कहीं पे कोई trip पे चले गए, थोड़ा सा weight gain हो गया, and then you're just stuck with that, and again you're in that same loop, and beyond a point you're repeating this cycle again and again, and again you come back from the trip, and now you want to lose that 2 or 3 kilos. It's going to take you like 7 8 months of
again a lot of motivation, a lot of strictness with yourself, deprivation to again, come back to a point, and again, poof, it just pours with very little of, indulgence again.